A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum to all of you. Today my topic is population pyramid of India. Chapter number 6. The name of the chapter is Human Resources, Class 8, Subject Geography. Dear students, as you know, जैसा कि आपको पता है, we were discussing the population pyramids, in which we have discussed population pyramid of Kenya. Now we will continue it to discuss population pyramid of India and Japan. India and Japan. जैसा कि प्यारे बच्चों, in countries where death rates especially amongst the very young, especially amongst the very young, and decreasing, the pyramid is broad in the younger age groups. In the younger age groups, because more infants survive to adulthood. More survive to adulthood. This can be seen in the pyramid for India. ये हम देखेंगे. This can be seen in the pyramid for India. यहाँ पे हम देखेंगे, जैसा कि आपकी जियोग्राफी बुक पेज नंबर 69 फिगर 6.8 आप देख लीजिए. Such populations contain a relatively large number of young people, and which means a strong and expanding labor force. जैसा कि इस फिगर में दिया गया है पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया. यहाँ पे दिया गया है एज ग्रुप, जैसा कि एज ग्रुप ईयर्स यहाँ पे परसेंट है. तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, वो है पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ जापान. पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ जापान. जैसा कि प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम देखेंगे पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ जापान. In countries like Japan, हम लेके like Japan, low birth rate make the pyramid narrow. Low birth rate make the pyramid narrow at the base. यहाँ पे हम देखेंगे एट द बेस.
जैसा कि प्यारे बच्चों आपकी बुक पेज नंबर 69 फिगर जो है वहाँ पे दी गई हैं 6.9 पॉपुलेशन pyramid ऑफ जापान decreased death rates allow numbers of people to reach old age numbers of people to reach old age जैसा कि प्यारे बच्चों skilled spirited and hopeful young people young people endowed with a positive outlook endowed with a positive outlook or the future of any nation जैसा कि प्यारे बच्चों we in India हम इंडिया में रहते हैं we in India are fortunate to have such a resource or fortunate to have such a resource to have such a resource they must be educated and provided skills and opportunities to become able and productive तो प्यारे बच्चों इसी के साथ ही हमारा जो टॉपिक था पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया एंड जापान कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।